Hello, good afternoon, and welcome all to my YouTube channel After School Academy. मैं आपकी verbal ability trainer Grover ma'am and I am here to teach you the one word substitution. हमारे पास बहुत सारे interesting words हैं one word substitution में which we generally learn and they are asked in our exams. Now आज हम पढ़ेंगे one word substitution, the words which are used for the person or the people. Now here we begin, one who is recovering, health after illness. जो जना अपने illness के बाद recover करता है from the condition that is known as a convalescent. Convalesce मतलब to recuperate, to recover और recovery से term आया है convalescent, right? Then we have the next term that is person living in at the same age, at the same time. जिस time को हम belong करते हैं उसी time की अगर हम बात करें जिसमें दूसरी चीजें भी होती हैं तो हम उस चीज को बोलते हैं कंटेम्परेरीज. लाइक अगर हम बात करें डांस फॉर्म जो अभी प्रेजेंट जनरेशन के अकॉर्डिंग सेट है तो हम उसे बोलते हैं कंटेम्परेरी डांस. सिमिलरली वी हैव कंटेम्परेरी म्यूजिक. सो कंटेम्परेरी इज समकालीन, उसी समय का जिस समय को हम बिलोंग करते हैं, राइट. देन द नेक्स्ट वर्ड इज वन हु बिलीव्स इन फेट. जो लोग किस्मत पे विश्वास करते हैं उन्हें हम बोलते हैं फेटलिस्ट, as they give a lot of emphasis on their luck, their destiny, and thus they are called as fatalist. The next term that is there is one hard to please. जिसे please करना, जिसको satisfy करना, जिसको खुश करना बहुत मुश्किल हो, उसे हम बोलते हैं fastidious. कोई भी चीज जब तक उसे perfect नहीं दिखाई देती, that person doesn't appreciate or likes it, so that person is known as fastidious. A lover of good food, जो अच्छा खाना, अच्छी getting the best of everything, luxuries and everything, food, drink, तो हर चीज उसे जो पसंद होती है, अच्छा खाना enjoy करना, that person is known as gourmet. ठीक है, तो here the word is government. A person of intellectual or erudite taste, जिसको ज्ञान की बातें पसंद होती हैं, जो बहुत ज्यादा समझदारी की बातें करता है और जो इंटेलेक्चुअल थॉट रखता है, जो डीप थिंकिंग में जाता है, दैट पर्सन इज नोन एज एरुडाइट. उसे कोई भी फुलिशनेस की, कोई भी स्टुपिडिटी की बातें पसंद नहीं आती. That is of erudite taste is highbrow. So even the erudite word is one who is very learned intellectually, and here the term which we have given for this, another synonym is highbrow. Then a person with imaginary symptoms and ailments. Now though physically you will find that person to be absolutely fit and fine, to be in good condition, बट अगर उस पर्सन के एक माइंड में होता है, एक दिमाग में एक साइकोलॉजिकल एक फीलिंग बन जाती है कि वो कोई ना कोई प्रॉब्लम से अफेक्टेड है, दैट पर्सन इज नोन एज हाइपोकॉन्ड्रियाक, राइट. सो द टर्म हाइपोकॉन्ड्रियाक कम्स विद एन इमेजिनरी सिम्टम्स एंड इलनेस. नाउ नेक्स्ट वी हैव द वर्ड फॉर पर्सन हु शोज द सस्टेन्ड एंथुसियास्टिक एक्शन. जो जल्दी टायर्ड नहीं होता, जो कोई भी चीज का इंटरेस्ट जल्दी लूज नहीं करता, एंड सस्टेन्ड मतलब होता है लॉन्ग टाइम तक. enthusiastic मतलब when you are active for a very long time, then you don't feel tiredness for anything, and that term takes indefatigable. तो fatigue is used for tiredness. उसे fatigue नहीं होता, उसे tiredness नहीं होती, that is why the term indefatigable, right. Then one who does not express himself freely. कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी दूसरे के साथ फ्रेंडली हो जाते हैं, they mix with the others very easily, they are known as extrovert. So here we talk about antonym of introvert, and that term is known as extrovert. Introverts are those who are shy or who are reserved in their nature. So they are called as introverts, shy or reserved. They do not mix with others quite easily. And the antonym is
extrovert. Then we have one more term that is ambivert. Ambivert वो होते हैं जो at times जल्दी आपसे फ्रेंडली हो जाएंगे, बट कभी कभी वो अपने आप में ही खुश रहते हैं. They are shy, so they have a dual nature. That is why ambivert, ambi दो चीजों के लिए आता है, dual चीजों के लिए आता है, thus the term ambivert. Then the next is one who behaves without moral principles. उसमें कोई भी morality नहीं होती, उसमें कोई भी एक set pattern नहीं होता जो उसे follow करना होता है. They break the rules, they violate the things, and thus that person can be said to be immoral, means lacking the moral behavior and values. Then one who is unable to pay his debts. अब अगर कर्जे चढ़े हुए हैं और कर्जे वो दे नहीं पा रहा है तो वो पर्सन हो जाता है दिवालिया, क्योंकि उसके पास देने के लिए कोई पैसे नहीं है. That can be called as insolvent, or we have a synonym for it, that is bankrupt. So bankrupt is one who doesn't have money to pay back, right? Then a person who is mentally ill, जिसके जो मेंटली एक सेंसिबल बिहेवियर नहीं करता, जो मेंटली अनफिट है, जो एक सेंसिबल बिहेवियर नहीं कर रहा है, उसे हम बोलते हैं ल्यूनाटिक. ल्यूनाटिक इज समवॉट लाइक इनसेन, नॉट mentally sound, not in a stable state of mind. So thus they are also showing insanity, and thus a person is insane. A person who dislikes humankind and avoids human society, जिसे दूसरे human beings ही पसंद नहीं है, उन्हें उनके साथ रहना भी पसंद नहीं है. So they are called as misanthrope. Now miss जो है वो हमारी एक root word है, this word miss, and it makes the things negative. Now anthrope जो term आया है वो mankind से आया है, जो mankind को dislike करता है, hate करता है, that person is called as misanthrope. A hater of mankind or who dislikes the humankind, that is a misanthrope. Someone in love with himself, very much self-centered, very much considered about one's own things, selfish kind of person, and that is narcissists. They admire themselves for everything what they have. सेल्फ एडमायरर होते हैं, अपनी ब्यूटी को, अपने लुक्स को, अपने बारे में ही ज्यादा वो सोचते हैं, एंड thus the term comes as narcissist. Then moving to the next person, a leader who sways his followers by his oratory. The oratory means the skill, the art of persuasive speaking. So oratory is persuasive speaking, किसी को कन्विंस करके बोलना, और ऐसे लोगों को हम बोलते हैं डेमागोग या फिर रैबल राउजर, क्योंकि ऐसे लोग भीड़ को भड़काते हैं. वो भड़काने वाले लीडर को, पर्टिकुलरली ये पॉलिटिकल लीडर्स में ये क्वालिटी होती है, and thus they have got quite good convincing power, and what they say that make the others believe them, and they are known as a demagogue or a rabble rouser. Then someone who attacks cherished ideas or traditional institutions, जो हमारे ideas हैं, beliefs हैं, notions हैं, जो हम मानते हैं जिन चीजों को, वो उसको नहीं फेवर करता है, who attacks them, and thus the person is iconoclast, a misbeliever or a heretic. So heretic is against the conventional thoughts and beliefs. They are kind of radicalists who believe in change, and they are misbeliever in these things. One who lives in solitude. Solitude का मतलब होता है जो अकेले रहना पसंद करता है, जिसे किसी दूसरे की कंपनी का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है. That person is a recluse, or we can always call them a hermetic. सन्यासी की तरह होता है. They are quite happy in their own world what they are, and thus they live in solitude, all by themselves, alone. One who walks in sleep. Now one who walks in sleep, one who talks in sleep, there are a lot of words for that. Sleep के लिए जो हमारा basic root word आता है, that is somn. Somn is related to sleep. So root word for
sleep is som. अब यहाँ पे walk करने के लिए जो word आता है that is amble. Amble मतलब to move, and thus the word which is framed is somnambulist. Now ist जो है वो हमारे कभी भी जब हम noun words बनाते हैं तो हमारी ये endings लगाई जाती हैं. There are some suffixes. Noun suffix में ist, ion, ing आते हैं. So this is a noun word. So somn is and who walks in sleep is somnambulist. So how it has been derived? I have already shown you. फिर हमारा एक term आता है somniloquist. Loquy. So one who talks in sleep. L-O-Q-U-Y. So here the word which we have is L-O-Q-U-Y, that is loquy. Then loquist जो word है that is derived from the word loquacious, मतलब जो बहुत ज़्यादा talkative होता है. L-O-Q-U-Y. तो loquist is a person, loquist जो बहुत ज्यादा बोलता है, जो बहुत ज्यादा उसके पास मैटर होता है बोलने के लिए, a kind of chatterbox. And somn is sleep, जो नींद में बोलता है, that is a somniloquist. So somniloquy is an action, whereas somniloquist is L-O-Q-U-I-S-T. So here the term that we have to use is somniloquist, one who talks in sleep. Then we have the next one who pretends to be what he is not. जो आप दिखते हो वो आप हो नहीं in real sense. So thus you have a kind of a double standards. You are not what you are seen, and you are a hypocrite. So those who have a double standard, those what they say they are not, and thus the word is hypocrite. पाखंडी, ढोंगी, जो वो दिखते हैं वो एक्चुअल में उसे प्रैक्टिस नहीं करते हैं. One who looks at the dark side of things, जो चीजों को नेगेटिव वे में परसीव करते हैं उन्हें हम बोलते हैं पेसिमिस्ट. और जो इनके लिए हिंदी टर्म आता है निराशावादी. हर चीज में कोई ना कोई नेगेटिविटी फाइंड करते हैं. बट इसका ऑपोजिट वर्ड आता है ऑप्टिमिस्ट. सो ऑप्टिमिस्ट is used for a person who looks at the positive side of things, who is always full of hope and has lot of expectations. So that word is optimist. One who settles in another country. So आप अपनी कंट्री को छोड़कर अगर दूसरी कंट्री के नेटिव बन जाते हो, वहां सेटल हो जाते हो, because you have left your country, you have migrated to another country, you become an immigrant in that country. और आप अपनी कंट्री छोड़कर जा रहे हो, so you leave your country, that is immigrate. So immigrant is one who settles in another country, and one who leaves one's country is immigrant. One who leaves one's country. और जहां पे वो सेटल होता है वहां के लिए जो टर्म आता है दैट इज इमिग्रेंट. इमिग्रेंट. So these are the two terms, immigrant and immigrant. And migrate is a normal word which means to go from one place to another, to move from one place to another, that is immigrate. Then the next terms that we are going to read is for the murder or death of a person. Now जब भी हम बात करते हैं for death of anyone तो हम देखेंगे कि सब में endings जो लगी हैं वो CID is side. So this is a suffix which shows the murder or death of any person. अब अगर किसी डिस्ट्रक्शन और एबॉर्शन ऑफ फीटस मतलब अनबॉर्न चाइल्ड, अगर अनबॉर्न चाइल्ड को मदर के वूम्ब में ही उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उसको उसकी लाइफ को एंड कर दिया जाता है, देन दैट इज नोन एज फीटिसाइड. सो फीटस से फीटी टर्म एंड देन साइड इज किलिंग. तो किलिंग ऑफ अ फीटस. देन किलिंग ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग जो एक पर्टिकुलर रेस को, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, अगर बहुत सारे एक बड़े समुदाय के लोगों को इकट्ठे मार दिया जाए, दैट इज नोन एज जीनोसाइड. So killing of lot of genetically related people, that is genocide.
देन किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर, एक ह्यूमन बीइंग अगर दूसरे ह्यूमन को मारता है तो वो नॉर्मल में अगर हम देखें तो एक वो मर्डर या किलिंग भी होती है, एंड वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज होमिसाइड। तो होमिसाइड ह्यूमन बीइंग के लिए आया है, किलिंग ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड एज होमिसाइड, या फिर एक नॉर्मल ये हमारा मर्डर और किलिंग भी कहलाता है। देन किलिंग ऑफ इन्फेंट, इन्फेंट इज द न्यूली बॉर्न चाइल्ड, 1 ईयर तक का जो बच्चा होता है या न्यूली बॉर्न, उसे 1 ईयर तक की जो एज होती है that is called as infant. So killing of an infant, that means one child who has not even attained 1 year of age, is known as infanticide. Then next term is killing of one's mother. Now mother के लिए हमारा जो root word आता है वो matri आता है, like हम बोलते हैं matriarchal system, और अगर हमारे फादर के लिए जो हमारा रूट वर्ड है पेरेंट्स के लिए, वहां पे हमारा फादर के लिए आता है patricide, right? So here that is why we have matricide and patricide, maternal और paternal से derived है. So matricide is derived from the term maternal, maternal से आया है, और patricide paternal से आया है, that means from father's side. Killing of one's sister, here we have the term sororicide. So this word sorori is used for sister. So they are derived from some basic root words that are Greek or they are French, and accordingly we have these words. Then the next is for the profession or the research. So one word substitution which are meant for some profession. A person who presents radio or television program, जो programs को conduct करता है और उसे present करता है, that person is an anchor. So a radio jockey अगर हम देखें तो radio program के लिए हम और भी एक specific term use करते हैं, but एक general term क्या हो गया? That person is an anchor, क्योंकि वो anchoring कर रहा है, क्योंकि वो present कर रहा है उस program को. Then one who studies the evolution of mankind. So अभी हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था one who dislikes humanity, उसमें हमने पढ़ा था misanthrope. One who hates, anthrope is for humanity, human beings, और यहाँ पर हमारा anthropologist आया है. Now logy जो होती है that is study of anything. तो logy एक हमारी again एक suffix है, and wherever we add this suffix, logy means study. तो study of something is logy. Anthropologist is mankind को जो study करता है, that becomes an anthropologist. And not only mankind, the evolution, the evolutionary changes, how from the early man stage they have come to this stage, या कोई भी race जो है उसमें क्या changes आ रहे हैं accordingly. Then a person who is trained to travel in a spacecraft, spaceship या spacecraft में हमारे जो trained people, those who are made to travel, they are called as astronaut. So astronaut is related to one who travels in a spacecraft. The medieval forerunner of chemistry is known as alchemy. Now alchemy मतलब middle ages में, mid ages में जिस तरह से chemistry के metal, कोई भी base metal से हम gold बनाते थे, उस method को हम बोलते थे alchemy. So thus साइंस जो हमारा केमिस्ट्री का जो मेटल का कन्वर्जन पार्ट है हमारे उस मिड एजेस के पार्ट से आया है, एंड दस इट इज अ फोररनर. इट केम इनिशियली, दैट इज व्हाट पीपल न्यू अबाउट केमिस्ट्री. तो पहले हमारे को क्या पता था, हमारे जितने भी मेटल्स हैं नोन, उनकी वैल्यू के बारे में, उनके यूज के बारे में हमने सबसे पहले पता किया, एंड दस इट वाज टर्म्ड एज एल्केमी. A person who draws or produces maps. Now there are people who are quite well aware of how to make a map of a particular place or a particular location, and these people are known as cartographer. So graphy is like making it, drawing it, the picturesque presentation, and carto for the map. So cartographer. A person who writes beautiful writing. अब जिनकी handwriting बहुत सुंदर होती है, they have a very artistic way of writing the things, that is known as calligrapher. तो उस person को हम बोलते हैं calligrapher. हमारे schools में calligraphy competitions होते हैं, that is handwriting competition, कि कौन कितना सुंदर, कितनी अच्छी लिखावट करेगा. So that a person
who has beautiful handwriting is known as a calligrapher. Then a person who composes the sequence of steps and moves for a performance of dance, जो हमारे डांस सिखाते हैं ट्रेनर्स और जो हमें जिनके बहुत अच्छे से मूवमेंट्स होते हैं, they are known as choreographers. So choreography is related to the dance moves and how it has to be presented. Then we come to the next set of words, that a person hired to drive private or hired car. राइट अब जो कोई भी व्हीकल ड्राइव करता है, कोई भी चीज ड्राइव करता है, वो ड्राइवर होता है. बट स्पेसिफिकली अगर आप किसी के अंडर एक प्रोफेशनल की तरह वर्क कर रहे हो फॉर कार ड्राइविंग एंड ऑल्सो फॉर द मेंटेनेंस एंड ऑफ द थिंग्स एंड लुकिंग टू योर प्रॉपर अपकीप ऑफ द थिंग्स, तो उस पर्सन को बोलते हैं chauffeur. So chauffeur is a person who drives a private or hired car. Then a person who introduces the performers or contestants in the various shows is known as compere. कोई भी शो को प्रेजेंट करना वो एंकर का काम होता है, बट पार्टिसिपेंट्स को इंट्रोड्यूस करना, उनके बारे में एक्सप्रेस करना, दैट्स अ वर्क ऑफ अ compere. Then a keeper or custodian of a museum or other collections, जो पर्सन टेक केयर करता है म्यूजियम की, उसे हम बोलते हैं क्यूरेटर. And we did one more word related to museum and all, that was called as where we keep the records, है ना, तो हमने वो जगह करी थी. And now we are doing one who is related with the upkeep of the museum, maintenance of the museum. उसे custodian कहा गया है, उसको maintain करता है, उसका रख रखाव करता है, and that person is known as curator. और वो जो हमने term पढ़ा था, that was archives. The study of statistics about the death rate, birth rate, and various other changes that come in the population of a place is known as demography. So presentation of the statistics about the population is demography. Then the use of fingers and hands to communicate and convey ideas. तो जब भी हम sign language use करते हैं, moreover those who are deaf, they need to be express the things by various signs and symbols. तो उस वे को हम बोलते हैं dactylology. तो logy, as you know, I have introduced to you कि study से आया है. Study of anything is logy, and dactylo is used for the toes and the fingers. That's a root word again. Then a person who compiles dictionary. डिक्शनरी का जो कंपाइलेशन करता है, उसमें सारी चीजें प्रॉपरली अरेंज करता है और उनको एक प्रॉपर वे में प्रेजेंट करता है, दैट इज अ लेक्सिकोग्राफर. सो लेक्सिकन इज another name we use for dictionary, another word we use for dictionary, and one who is creating that is a grapher and does lexicographer. Then the art of effective or persuasive speaking or writing is called as rhetoric. As I gave you another word, oratory initially, जहाँ हमने rabble rouser करा था. Now here we have the word oratory, one who has good oratory skills. They are good speaker, they are good public speakers, influencer, and thus they present the things wonderfully, right? Then coming to the end of the slides now, and here we have interesting words that we have learned today, and it is quite an interesting session for you as a learner. So that's all for the day. Thank you. Have a nice day ahead.